3, let's go! So hey guys, welcome back to my channel. I'm back with another weekly vlog, and I mean I don't remember the weekly vlog number, but I guess this is 7 or 6, I don't know. So yeah, now we are at the mall, so we are going to have some food. Actually it's 5 o'clock and we haven't had our lunch, so yeah, 1 second, we'll just get out. So we haven't had any food, isliye now we are going to have food. We had some work to do, that's why we came to Malad. Now I've come to Oberon Mall. I'm gonna have some food, and yeah, Mama, today is Navratri's white day. That's why my mom's wearing this gorgeous white sari and she looks gorgeous. You look beautiful. Thank you. So मम्मा पहली बार पोड़ी इडली, I hope I'm pronouncing it right, वो टेस्ट कर रही है. हम लोग ने आज तक I don't remember as of like if we've ever had or tasted पोड़ी इडली. So yeah, mom just tasted it. मामा कसा है? छान है? नॉर्मल इडली पेक्षा छान आहे. नॉर्मल इडली पेक्षा छान आहे ना? मस्त आहे. You like it, right? खाऊन बघ, छान आहे. I like. You like it, right? So yeah. तो मुझे ना फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने खुद के लिए फ़िल्टर कॉफ़ी ऑर्डर की है, एंड दैट टू विदाउट शुगर बिकॉज मामा इज ट्राइंग टू लूज हर वेट. सो विश मी लक फॉर दैट, you know, this journey of me losing my weight, because now I look like at least my stomach looks like a 4-month pregnant lady's one, so I don't want that to be the scene anymore. So yeah, that is it, and I'm showing off my neon nails, which I'm loving. The next day. So guys, अभी मैंने just weekly vlog का editing किया, finishing किया, और अभी तुरंत मैं post करने वाली हूँ. just thumbnail डालना है, फिर the video will be live. So if you haven't watched my weekly vlog number 6, go watch it. It was a pretty basic vlog, but it was a, you know, special and important vlog as well. And please excuse this banging voice or noise in the background that you might hear. It was my best friend's birthday, so it was pretty special. And yeah, my mom is nicely having a coffee. She just had bread and coffee. Mummy, so I don't know if you saw my last weekly vlog in which I had gone to Colaba. So I had got Starbucks ka coffee. So my mom just had that wala coffee. She made it and had. मम्मी तुला Starbucks ची कॉफी कशी वाटते? म्हणजे कॉफी पेक्षा टेस्ट खूप सुंदर आहे. सुंदर आहे ना? So yeah, my mom's been ever since I bought it, my mom's having Starbucks ka coffee. Even my friends had it and they all loved it. So yay! तो एक्चुअली हम लोग हमारे यहाँ के इंडियन पोस्ट को आए थे. जस्ट एक्चुअली मेरा मोनेटाइजेशन तो हो गया है, तो अभी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी एंड मेरे अकाउंट में पैसे भी मतलब मोस्टली हो जाने चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट डेट. आफ्टर दिस यूट्यूब मतलब credits money into your account after I verify. So I came to get my verification code. And how do you feel, mummy? मला खूप बरं वाटते, खूप आनंद होते, खुशी होते की माझ्या मुलीच्या अकाउंटमध्ये आता यूट्यूबचे तिच्या मेहनतीचे पैसे क्रेडिट व्हायला सुरुवात झाली. Yay! So now since we had come to the post office, we thought might as well do some fruit shopping. So my mom's buying fruits. As you can see, she's behind there, and this is the fruit shop from where we normally buy our fruits. Like, this is the best shop here. So we get our fruits always here. So guys, I just came home and yeah, I'm back with this, my Google AdSense postal code. Actually it's a pin code verification. After I enter the pin code that is given inside this, my monetization will actually happen in action. As in, let me explain you. Basically monetization criteria, I've met the eligibility, as you guys must have heard in one of my vlogs. I definitely mentioned it, and now after you're eligible for like this monetization, then the you have to make a Google AdSense account. And if you have the Google AdSense account, it's pretty easy. You can Google it and you'll know what a Google AdSense account is. Once you have the Google AdSense account, they will send you a PIN verification postal. I mean at your address they will send you a PIN, and once you're eligible for monetization, the PIN you'll get it within 10 to 14 days, maximum 10 to 14 days, and then you just have to enter the PIN in your Google AdSense account and you'll be verified. If you've earned $100 up till now from your YouTube videos, then money will start crediting into your account.
And yeah, that is it. So I'm gonna get myself verified and let's open this together. You know, there are these instructions that are given properly there. Remove side edges first. So I'm gonna be removing this and this and this. Like this. One done. Oops. Then the second is also almost done. And now the third one is also done. So I'm not going to show you my clips, but this is how it looks. This is exactly how it looks. They've given on the left side, there's this Google AdSense or Google things, you know, this what, as you can see, this blue color thing, and on the right hand side you will have the steps given, how you can enter the pin, and also the pin given. So you should not show your pin to anyone else. That is it for this, you know, this thing. So yeah. So now I'm gonna go enter the Google pin. I'm verified on YouTube. I'm so happy, by the way. Now finally this thing is done and dusted. Now all my steps for my monetization, everything is like done. The next day. So guys, आज कुछ तो पूजा है, कुछ तो भी है, तो हमारे नेबर्स ने बुलाया है, तो मम्मी तो 1 घंटे से जाके बैठी, बट मैंने नहाया नहीं था, इसलिए फिर मैं गई नहीं, तो अभी नहा लिया है, तो अभी जाती हूँ. मम्मी बोल रही है कितना लेट हो गया. एंड से हाई टू न्यू मेंबर्स ऑन माई फेस. Anyways, what the hell? This is me being all young and having these fruits on my face. As senseless as that sounds, but it is what it is. So yeah, now I'm gonna go because also I'm starving. तो वो करके घर पे आके मम्मी के साथ मस्त भोजन करूँगी. एंड पीछे अगर पता नहीं यार नवरात्रि चालू है कि नहीं, गाने तो सुनाई दे रहे हैं, बट अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है जाके नाचना वाचना. सो The next day. पिंक डे के पिंक आउटफिट्स. So this is my footwear and this is mommy's. So मैं और मम्मी यहाँ पे स्कैनिंग के यहाँ पे आए हैं, कुछ काम के लिए स्कैनिंग करना ज़रूरी था, इसलिए फिर अभी स्कैन कर रहे हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब. मम्मी के भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना था, तो अभी वही कर रहे हैं. और पहले थाने जाके आए, थाने भी जाना था काम से रिलेटेड, तो थाने भी जाके आए. एंड मम्मी ने ये पिंक कलर का शर्ट, पिंक डे, तो हम लोग पिंकी बन गए. मैंने कुर्ती पहनी है, मेरी पुरानी कुर्ती, एंड मम्मी ने शर्ट पहना है. इतना क्यूट. मेरा तो नया शर्ट है बाबा. तो वही अभी सारा स्कैनिंग करेंगे, फिर घर जाएंगे, और आज में भी नवरात्रि भी खेलेंगे. सो गाइज, मम्मी अभी भी वो शॉप पे है जहाँ पे स्कैनिंग एंड ऑल कर रहे हैं, बट मैं घर पे आ गई. एंड 2 पार्सल आए, जिसमें से एक मैंने नहीं खोला और दूसरा मैंने खोल दिया. तो अमेरिकन ईगल सेंट मी दिस क्यूट टी शर्ट, एज यू कैन सी. Can't wait to actually wear it. I got it in the size M. I mean, they ask us which size they want. Like they want us. I mean, they ask us in which size would they want to send it. So yeah, I chose medium size. I wanted a loose kind of fit. That's why. Now let's open this. So I opened the parcel and this is how it looks. Let's see what's inside this. I know these are a pair of sunglasses, but I don't know which one. I mean, which one they sent. I know for sure they are a pair of sunglasses. Now let's open the box together. This is how it looks from inside, like this. Let's see now. This is how it comes. Okay, are you ready for the reveal? Oops, it fell down. I mean anyways, whatever. So I've got my new pair of sunglasses. How does mama look? Tell me. I think it looks pretty good, doesn't it? Yeah, so these are going to be my new favorite sunglasses for sure. They're so, how do I say it? Like boho, cute and very trendy. So yeah, and plus they are in rose gold. So yeah, they're never going to go out of style. And they're from Tinted, the Tinted Story. Go follow them on Instagram. They've done such a good job. Like, go check out their Instagram page and give them a follow. The Tinted Story is their page on Instagram, and go happy shopping. I mean, go shop. Also, this came in the courier today, so I actually opened it, as you can see, and this is how like the inside of the, maybe not the inside, this is how the packaging of the verified lipstick looks like. I'm sure you don't know, or maybe you know, this is a lipstick brand or a makeup brand that
that is by Anam. So she has named her, you know, this makeup brand Verified, and she recently launched it, and to show my support and to show my love, I ordered it. That's the only reason why I ordered it. Otherwise I have so many lipsticks, I don't need a new one. I mean जरूरत ही नहीं थी ना, but फिर भी मैंने ले लिया because you know वो इतनी excited थी, and I know, like I can understand she has put so much of efforts in it. So yeah, so this costed for 899, which is 900 rupees, and this is how this gorgeous, you know, lipstick looks like. बहुत ही ज़्यादा, you know, luxurious feel आता है जब ये lipstick को मैं हाथ में पकड़ रही हूँ. बहुत स्टर्डी है, बहुत ही ज़्यादा, एंड मुझे लगा ऐसे, you know, ऐसे खोल के वो ये होता है, मतलब ओपन होता है लिपस्टिक, बट नहीं, you have to, you know, do it like that, and when you open it, this is how it's gonna look. This is the sturdiest packaging. I mean, look at it. I for sure love the packaging. She has definitely put a lot of thought in it, and this is the lipstick. Like, look at this lipstick. Look at it. It's so freaking gorgeous, isn't it? I also applied it on my lips. I don't know whether you can tell or not, but I did apply it on my lips. चले गया है वैसे तो, बट ये सुपर मैट है, ड्राइज ऑन द लिप्स, अप्लाइज एकदम, यू नो, क्रीमी टेक्सचर कैसे रहता है वैसे अप्लाई तो हो जाती है, बट मैट उसका लॉन्ग लास्टिंग है काफी ये. तो या आई मीन आई थिंक शी शुड हैव प्राइस्ड इट मोर डिसेंट, बट ठीक है चलो अभी, यू नो, what more can you ask? And also she's a new brand, and yeah, support small businesses, so hers is also a small business and it's a beginning. I'm sure when the sale and all drops, they'll be charged at a reasonable price, but yeah, 900 rupees I still feel is like too much. But anyways, so guys, हमारे बिल्डिंग में कब से देवी बैठी थी, बट हम लोग गए नहीं. मतलब दर्शन तो ऑब्वियसली कर लिया, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, बट खेलने वेलने चालू नहीं था, बट कल या परसों से खेलना भी चालू होगा, इसलिए हम लोग अभी फिर से रेडी हो गए. दोनों ने पिंक पहना है, मैंने भी कुर्ती और मॉम ने मैक्सी ड्रेस पहना है. एंड हाँ, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं हमारे बिल्डिंग की, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स की, क्या देखने, गरबा देखने कॉम्प्लेक्स का. yes. और हाउसी भी खेलने वाले वो लोग, गेम है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वो सब अटेंड करने जा रहे हैं हम लोग. So yeah. The next day. Guys, happy दशहरा. So आज मेरी क्लोज फ्रेंड अनुराधा के क्लिनिक का ओपनिंग है, और हम लोग ऑलरेडी लेट है. आई गेस 4:30 का इन्विटेशन था, बट अभी आई गेस 6 o'clock और समथिंग लाइक दैट हो गया होगा. तो एनीवेज, आई एम अबाउट टू गेट रेडी. लाइक आई जस्ट हैव टू डू अ बिट ऑफ मेकअप, एंड माय मॉम्स गेटिंग रेडी. शी इज worn a pretty साड़ी. मम्मा show your saree once again. See, well, we'll get ready completely and then see you guys. But yeah, I'm really happy for Anuradha, and I'm excited to see her. It's been a long time. Actually, long time. We met last on my birthday, so pretty long, right? So anyways, now I'm gonna quickly get ready and leave. So हम लोग रेडी है, एंड बहुत लेट हो गया है, 7 बज रहे, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. और बैकग्राउंड में ना हमारे घर के नीचे देवी का विसर्जन हो रहा है ना, इसलिए वो बैंड बज रहा है, मतलब ये जो बजता है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे, तो उधर उसके क्लिनिक पे मिलके पहुंच के मिलते हैं. ये तो एक गिफ्ट पैक करके अनुराधा के लिए बुके तो ले लिया. अभी हम लोग उसको एक, यू नो, शो पीस देने वाले जो वो क्लिनिक में रख सकती है. तो मम्मी गणपति बापा देने की कि बुद्धा देने की, क्या बुद्धा देने की. सो मॉम हैज ऑलरेडी फाउंड वन, सो लेट्स गेट इट. कौन है? हाँ चलो सर. ओके, सो वी आर टेकिंग दिस वन. थँक यू. ये तो पागल ही आहे. थँक यू. त्या देवानेच बनवलेले असतात. आम्हाला पण आवडलं. बचपन के फ्रेंड्स. हाँ, वही बचपन के फ्रेंड. आंटी बोल रहे, भाभी को आपको बोल रहे. Congratulations. थैंक यू. The next day. So guys, अभी ऑलमोस्ट रात के 10 बज गए, तो धनश्री का ना कॉल आया था, और अनुजा मैम और वो लोग साथ में, वो लोग एक ही क्लिनिक में काम करते, तो वो बोली आ जा बाहर. वो लोग अभी शायद डिनर बाहर करेंगे, किधर तो भी खाओ गली में. तो मैंने तो जस्ट, मम्मी ने मस्त मेथी के पराठे बनाए थे, तो मैंने वो खाया. तो मेरा तो फुल पेट टाइट है, 2 पराठे खा लिए, बट मिल लेती हूँ उनको, है ना. हाँ, मम्मी बोली मूंग दाल का भी डोसा बनाया, तो वही मेरा, मैंने चाय और 2 मेथी के पराठे जस्ट खाए. अभी आप सोच रहे होंगे रात के 10 बजे मैं चाय कभी भी पीती हूँ, वो इतना मुझे चाय पसंद है. तो उसको चाय और पराठे बहुत पसंद है, तो पराठा चाहिए उसको, पालक का, दूधी का, मेथी का,
कोई भी पराठा बहुत चाव से खा लेती है चाय के साथ। तो वही अभी मैं जा रही हूँ मेरे दोस्तों को मिलने, सोशलाइज कर लेती हूँ। पूरा टाइम घर पे पड़े पड़े बोर होता है, इसलिए भी उनको मिल के आ जाती हूँ, अच्छा भी लगेगा। With my friends and then I left Dhanush at a place, and I didn't eat anything because as I already mentioned earlier, I had eaten my dinner before I left from my home. So yeah, so I had my dinner, so I just went there especially to only meet them. So I didn't have anything except a slice of their corn pizza, if I'm not wrong. And then we went to have ice cream, not ice cream, actually we went to have, not we actually, the Anuja ma'am and Dhanushri had Faluda while we just sat there, and then I left Dhanushri and then I came back here so that we could get our massages done like Champi. So guys, I'm done with my massage now. My mom is in the process, like it's almost over. So anyways, that is it for this weekly vlog. Now I'm gonna go home and yeah, just sleep or maybe watch Netflix or something like that. But yeah, I'm gonna end the weekly vlog right here. Don't forget to hit the subscribe button if you haven't already, and excuse me for the way I look, because obviously Champi ki to aise hi dikhungi, hai ki nahi? And yeah, I hope you enjoyed it. If you did, don't forget to hit the thumbs up button and don't forget to subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Until then, stay safe, take care and get vaccinated. Bye bye.